अजीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद तजम्मल लेक्चर नंबर 19 लेकर एक मरतबा फिर हाजिर है। आज के लेक्चर में हम पिछले लेक्चर से ही तसलसल के तौर पर सुपर मैश एनालिसिस तकनीक को मजीद देखेंगे। पिछले लेक्चर में जो कि हमने सुपर मैश तकनीक की एक एग्जाम्पल की थी, उसमें हमने देखा कि दो सुपर मैशेस को कंबाइन करके किस तरह से एक सुपर मैश में कन्वर्ट किया गया है, जबकि ये दो स्मॉल मैशेस एक दूसरे के ऊपर नीचे सर्किट में बनाई गई थी। आज के लेक्चर्स में हम कुछ मजीद पेचीदा किस्म के सर्किट देखेंगे, जिनमें मुख्तलिफ किस्म के सोर्सेज यानी कि करंट और वोल्टेज सोर्सेज, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर दो ऑर्डिनरी मैशेस एक दूसरे के ऊपर ना भी हों तो किस तरह से सुपर मैश के तखय्युल को इस सर्किट में कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा हम और मजीद पेचीदा किस्म के सर्किट देखेंगे, जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑर्डिनरी मैशेस को कंसिडर करके हम सुपर मैश में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसकी इक्वेशन लिखेंगे। आइए सबसे पहले एक रेजिस्टिव नेटवर्क, जिसमें थोड़ा सा सुपर मैश का ख्याल कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिस तरह के हमने पिछली मिसाल में पिछले लेक्चर में देखा था कि सादा तरीन सुपर मैश किस तरह से बनती है, इसमें थोड़ा सा मुश्किल सुपर मैश का बनना दिखाया गया है ताकि आपकी मजीद प्रैक्टिस हो। आइए एक नजर सर्किट को देखते हैं। Circuit shows a resistive network which consists of two independent current sources, one having a value of 2 milliamperes and the other one having a value of 4 milliamperes. However, another independent voltage source has also been attached into this circuit, and that independent voltage source is bearing a value of 12 volts. Considering this circuit, we want to calculate the current I naught, which is apparently mentioned through the 2 kilo ohm resistor value. Now, as our usual practice, we assign the respective currents which are unknown variables through the loops of the circuit. Looking upon to this circuit, we can easily see that it consists of 3 loops. However, if we try to solve this circuit using independent 3 small meshes, it will be a cumbersome circuit and we can end up in a wrong result. Therefore, we can reconsider our option for solving such a circuit from using the basic mesh analysis. And now we can see that the 2 milliampere independent current source is being shared between the mesh number 3 and the mesh number 1. Therefore, we can consider that the mesh number 3 and the mesh number 1 can be acting as a super mesh. Looking into the circuit once again carefully, for I1, which is we have considered the current through the mesh number 1, we can write I1 is equal to 2 milliamperes, because the direction of the 2 milliampere current and the direction of the current I1, they are in the same direction. Also, if we consider the current I2, we can write I2 is equal to minus 4 milliamperes, because the independent current source, which is having the value of 4 milliamperes, is providing the current which is in opposite direction as compared to I2. Hence, we have to put a negative sign next to it. Therefore, we have written I2 is equal to minus 4 milliamperes. Now,
The super mesh, which is consisting of the mesh number 3 and the mesh number 1, that can be applied with the Kirchhoff's voltage law. Applying Kirchhoff's voltage law to this super mesh, we can write the KVL equation as, starting from the top 2 kilo ohm resistance, the voltage drop across this resistance applying Ohm's law can be written as 2K into I3, because I3 we have already assumed that is the current flowing through the mesh number 3, which is also our super mesh, plus 1K. As we write the term for the 2 kilo ohm resistance, we pass through it and reach at the 1 kilo ohm value. As we reach there, once again, we can see that 1 kilo ohm resistance is being shared current-wise by the two currents, the current I3 and the current I2, which is flowing through the mesh number 2. And because we are writing the terms for the mesh number 3, therefore, we will write the current through mesh number 3, which is I3, as the first term, and the current through the mesh number 2, which is I2, as the second term. Hence, we have written 1K into I3 minus I2. As we write this term as well, we reach at the 2 kilo ohm resistance. Therefore, we will be ignoring 2 milliampere current source for the time being, and we reach at the 2 kilo ohm resistance. Now, the voltage term for this 2 kilo ohm resistance can also be written as 2K into, now this is the time to write the current through the 2 kilo ohm resistance. Now, as we are trying to write the current term or the net current through the 2 kilo ohm resistance, we have to be careful, because this branch, which consists of 2 kilo ohm resistance, is encountering three current values, that is the current I1, the current I2, and I3. Hence, we have to include all the three current values for the case that we can have the net value of the current which will be passing through the 2 kilo ohm resistance. अजीज तलबा, इस टर्म से मुतल्लिक आप सर्किट में गौर करें कि इसमें जैसा कि हम अब तक करते आए हैं, किसी भी शेयरिंग ब्रांच में दो करंट्स फ्लो कर रहे होते थे, लेकिन इस केस में तीन करंट्स एक ही ब्रांच में से फ्लो कर रहे हैं. अब इन करंट्स को जब हम नेट करंट फ्रॉम दैट एलिमेंट कंसिडर कर रहे होंगे, हमें मुख्तार तरीके से देखना पड़ेगा कि कौन से करंट की डायरेक्शन सेम है और कौन से करंट्स अगेंस्ट ईच अदर फ्लो कर रहे हैं. उसी हिसाब से हम इस टर्म में उनके अगेंस्ट साइंस भी असाइन करेंगे. मिसाल के तौर पर अगर दो करंट्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे तो उनको ऐड कर दिया जाएगा, और अगर दो करंट, जैसा कि हम अब तक करते आए हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट फ्लो हो रहे होंगे तो उनको सबट्रैक्ट कर दिया जाएगा. ताहम जिस लूप की इक्वेशन हम लिख रहे होंगे उसका करंट जो उससे रिलेटेड होगा वो पहले आएगा, और नेबरिंग लूप जिसको हम कंसंट्रेट नहीं कर रहे होंगे उसमें से फ्लो होने वाला करंट उसमें से सबट्रैक्ट कर दिया जाएगा. अब चूंकि इस ब्रांच में से तीन करंट एट ए टाइम फ्लो कर रहे हैं, लिहाजा हमें एहतियात से देखना पड़ेगा कि कौन कौन से दो करंट सेम डायरेक्शन में और कौन सा करंट अगेंस्ट देम फ्लो कर रहा है. उसी हिसाब से हम इनको साइंस भी असाइन कर देंगे. आइए इस टर्म को स्लाइड पर देखते हैं.
Therefore, we can write 2K I3 plus I1 minus I2. From the circuit, we can see that from the 2 kilo ohm resistance, the direction of the current I3 and I1 when they are passing through the 2 kilo ohm resistance are same. Hence, we can write I3 plus I1. Looking on to the current I2, which is through the mesh number 2, we can see that when it reaches at the 2 kilo ohm branch, it is flowing against the flow of the currents I3 and I1. Hence, we will write minus I2. As we complete this term, we pass through the 2 kilo ohm resistance and reach at the negative terminal of the 12-volt battery. Therefore, either we can write minus 12 equals 0, or we have written here onto the slide as equal to 12. Simplifying this expression, we can write 2K I3 plus 1K I3 minus 1K I2 plus 2K I3 plus 2K I1 minus 2K I2 is equal to 12. Further simplifying it, we can write 5K I3 minus 3K I2 plus 2K I1 is equal to 12. Further simplifying it, we can write 5K I3 plus 12 plus 4 is equal to 12. That is, this equation we have achieved after putting various values for the I1 and I2. Moreover, simplifying it, we can write 5K I3 is equal to minus 4, and we can find I3 is equal to minus 4 divided by 5K. That will be equal to 0.8 milliamperes. अजीज तलबा, अब जबकि हमने करंट्स I1, I2 और I3 की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है, तो हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि I0 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। इससे पहले कि I0 की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए, जरा सर्किट में गौर करके देखिए कि I2 जो कि अक्रॉस 2 किलो ओम रेजिस्टेंस डिमांड किया गया है, उस 2 किलो ओम रेजिस्टेंस में जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, 3 करंट्स एट ए टाइम फ्लो कर रहे हैं। अब इन करंट्स की एक मरतबा फिर हम डायरेक्शंस को कंसिडर करेंगे और इस तरह से हम I0 को कैलकुलेट करने के काबिल हो जाएंगे। आइए इस प्रोसेस को स्लाइड पर देखते हैं। नाउ once again we can see that the current I0 is equal to I3 plus I1 minus I2. And this plus and minus signs for the various values of the unknown variables have been assigned due to their direction. That is, if you see the 2 kilo ohm resistance, the current I3 and I1 are flowing into the same direction, therefore they will be adding up. However, the current I2, if we see at the 2 kilo ohm resistance, is flowing into the opposite direction as compared to I1 and I3. Therefore, we have put a negative sign against I2. Now, putting up the values for I3, I1 and I2, we can write I0 is equal to minus 0.8 plus 2 plus 4 milliamperes. Or alternatively, after simplifying, we can write I0 is equal to 5.2 milliamperes, which is our desired value. अजीज तलबा, इस मिसाल में आपने देखा कि किस तरह से एक टेढ़ी किस्म की सुपर मैश को कंसिडर करते हुए हमने अपने डिजायर्ड करंट को, जो कि I0 था, कैलकुलेट किया। अगली मिसाल में हम जो सर्किट पेश करने जा रहे हैं, उसमें 3 इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेस और एक 1 इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का इस्तेमाल किया गया है। 3 इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेस और एक 1 इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का इस्तेमाल किया गया है। 3 इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेस और एक 1 इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का इस्तेमाल किया गया है। 3 इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेस और एक 1 इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का इस्तेमाल किया गया है। 3 इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेस और एक 1 इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का इस्तेमाल किया गया है। 3 इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेस और एक 1 इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का इस्तेमाल किया गया है। 3 इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेस और एक 1 इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का इस्तेमाल किया गया है। 3 इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेस और एक 1 इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का इस्तेमाल किया गया है। 3 इंडिपेंडेंट
ये मिसाल जब हम इसमें सुपर मैश का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे तो कंपैरेटिवली इजी सुपर मैश की मिसाल है, क्योंकि पिछली मिसाल में सुपर मैश थोड़ी सी टेढ़ी थी, जबकि इसमें थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड सुपर मैश आएगी। ताहम सुपर मैश को कंसिडर करने से पहले यह असूल आप जहन में रखिए कि हमें मुख्तलिफ ऑर्डिनरी मैशेस को करंट्स असाइन करना पड़ते हैं और फिर एक करंट हम सुपर मैश को भी असाइन कर सकते हैं। आइए सर्किट को स्लाइड पर देखते हैं। We want to find the voltage V0, which is across the 1 kilo ohm resistance value. The circuit also uses 3 independent current sources, 2 of them having values of 4 milliampere and one having a value of 2 milliampere. Also, this circuit is using an independent voltage source having a value of 12 volts. Now, we can assign the currents to the individual meshes. Therefore, we define the top left box as the mesh number 1 and assign the current I1 flowing through it, which is in the clockwise direction. The top right box or the loop is designated as the mesh number 2, and we have considered that the current I2 is flowing through this loop, and this current is also considered into the clockwise direction. Underneath the mesh number 2, we have considered the mesh number 3. Therefore, we have assigned the current I3 to this mesh, and also this current is into the clockwise direction. Before we assign the mesh number 4, we can see that the current source, which is having a value of 4 milliamperes, is being shared between the mesh number 3 and the unassigned mesh. Therefore, we can easily define the mesh number 3 and the unassigned, which is empty mesh, as a super mesh. The reason being that we don't know the voltage across this 4 milliampere current source. Therefore, as we have said into the previous lecture, that if we assign some value as a voltage drop across this current source, then we will be in fact adding up another unknown variable into the circuit. Hence, we will be putting ourselves into trouble. Or sometimes, I again say, some people will say, okay, we assume that the voltage drop across this current source is equal to 0. That is also the wrong approach. Therefore, we have to consider the concept of super mesh and look the individual simple meshes for the writing up of various unknown current values, and we will apply the KVL to the super mesh so that we can put up these current values into that equation and calculate the current I4, which will be flowing through the super mesh. अब जबकि हम मुख्तलिफ सिंपल मैशेस की इक्वेशंस या उनमें से फ्लो होने वाले करंट्स को लिखने जा रहे हैं, तो हमें एक मर्तबा फिर बगौर ये जायजा लेना होगा कि किसी भी शेयरिंग ब्रांच जो कि दो मैशेस के दरमियान होगी, उसमें से करंट की फ्लो होने वाली डायरेक्शंस क्या हैं। यानी अगर कोई करंट किसी ब्रांच में से एज कंपेयर टू द इंडिपेंडेंट करंट सोर्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, तो हम उसको नेगेटिव साइन देंगे, और अगर उसी डायरेक्शन में जिसमें के इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का करंट फ्लो कर रहा है और हमारा साइन भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, तो फिर हम उसको पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे और आगे उसकी वैल्यू को
जो कि करंट सोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, जो हमें पहले ही दी गई है, उसको हम लिख देंगे। इस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ मैशेस में से विदाउट एफर्ट करंट्स की वैल्यूज आ जाएंगी। रहा मामला सुपर मैश का, तो उसमें फिर हम केवीएल को अप्लाई करेंगे। आइए इन बेसिक मैशेस में से करंट की वैल्यूज को लिखते हैं। फॉर मैश नंबर 1 वी कैन राइट I1 is equal to -2 milliamperes. Now this minus sign shows that the assigned value of the current I1 is flowing opposite to the 2 milliampere current source. Hence we have to put minus sign against the 2 milliampere value. Also, considering the mesh number 2, which is a basic mesh, we can write I2 is equal to -4 milliamperes. Once again, the direction which we have assigned to the current I2 is opposite to that of the 4 milliampere current. Hence, we have assigned a negative sign to the 4 milliampere value. For mesh number 3, we have assigned the current value as I3, and the current which is due to the independent current source having a value of 4 milliampere is also in the same direction. Therefore, we can write I3 is equal to 4 milliamperes. अब जबकि हमने करंट वैल्यूज I1, I2 और I3 को कैलकुलेट कर लिया है, तो हम अब सुपर मैश की केवीएल इक्वेशन लिखने की पोजीशन में आ गए हैं, ताकि इन वैल्यूज को हम उस इक्वेशन में पुट अप करते हुए अपनी डिजायर्ड वोल्टेज वैल्यू, जो कि एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिमांड की गई है, उसको कैलकुलेट कर सकें। सुपर मैश की इक्वेशन केवीएल को इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हम मैश इक्वेशन लिखते आए हैं लिखेंगे, और इसको एक पॉइंट से स्टार्ट होते हुए हम मुख्तलिफ सर्किट एलिमेंट्स में से उनकी रिलेटिव टर्म्स को इक्वेशन में डालते हुए पास ऑन करेंगे, तावक्ते के हम वापस उसी पॉइंट पर आ जाएं जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट लिया था। यानी कि वही बेसिक रूल कि कोई भी सर्किट एलिमेंट जब हम किसी लूप की या मैश की इक्वेशन लिख रहे हों, तो कोई भी सर्किट एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। आइए सुपर मैश पे केवीएल इक्वेशन लिखने के लिए स्लाइड पर चलते हैं। नाउ अप्लाइंग केवीएल फॉर लूप 4, which is our super mesh, we can write starting from 1 kilo ohm resistance 1K into I4 minus I1. This 1K value is the one across which we have been demanded to calculate the voltage V0. Therefore, we can also observe that this 1K resistance is being shared between the loop 4 and the loop 1. Also, we can see that the current I1 and I4 through this resistance are flowing in opposite direction with respect to each other. Therefore, in order to write the correct term with the help of the Ohm's law, we have to write the difference of the two currents. That is how we can reach at the net value of the current which will be flowing through the 1 kilo ohm value. Hence, we can write 1K into I4 minus I1. After writing this term, we reach at the next 1 kilo ohm value. Once again, we can see that this 1 kilo ohm resistance is being shared between the mesh number 2 and the mesh number 3. However, we can consider the current I4 flowing through this 1 kilo ohm resistance. And because we are writing for the super mesh and we have already defined that the current I4 is flowing through the super mesh, therefore, we can write
the current through the super mesh at the first, which is 1K into I4 minus the current from the mesh number 2 minus I2. Further going on, we can write plus 1K into I3. Now, because this second term, which is 1K I3, is introduced here due to the reason that I3 current, which is flowing through the mesh number 3, is also an independent current because it is only related to the mesh number 3. After writing this term, we reach at the 2 kilo ohm resistance. Therefore, we can write 2K I4 equals 12. عزیز طلبہ، اب جب کہ ہم نے سپر میش پر KVL کو اپلائی کرتے ہوئے ایکویشن لکھ لی ہے تو آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک مرتبہ پھر اس ٹپ کو میں دہراتا ہوں کہ جب بھی کسی برانچ میں سے ایک سے زیادہ کرنٹس کا فلو ہو رہا ہو تو اس میں کرنٹس کی ڈائریکشن کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور ٹپ جو ہوگا وہ یہ ہے کہ جس میش کی ہم ایکویشن لکھ رہے ہوتے ہیں اس میش سے متعلقہ کرنٹ پہلے آئے گا، جبکہ اس کے نیبرنگ جس کو ہم کنسنٹریٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس سے متعلقہ کرنٹ اس میں سے سبٹریکٹ کیا جاتا ہے. اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس ایگزامپل میں سپر میش کی ایکویشن لکھی ہے. آئیے اس ایکویشن کو فردر سمپلیفائی کر کے دیکھتے ہیں. Simplifying this equation, we can write 1K I4 minus 1K I1 plus 1K I4 minus 1K I2 plus 1K I3 plus 2K I4 equals 12. Further simplification leads us to 4K I4 plus 2 plus 4 plus 4 equals 12. In fact, we have put up the values of I1, I2 and I3 from the previous slide into this slide so that we can have I4 is equal to 2 divided by 4K, or we can write I4 is equal to 0.5 milliamperes. اب جب کہ ہم نے تمام کرنٹس I1, I2, I3 اور I4 کو کیلکولیٹ کر لیا ہے تو ہم فردر پروسیڈ کرتے ہیں. اگر ہم کوشچن کو ایک مرتبہ پھر دیکھیں تو ہمیں ان فیکٹ ایک ریزسٹنس کے اکراس وولٹیج کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جبکہ ریزسٹنس کی ویلیو کو سرکٹ میں مینشن کر دیا گیا ہے. اب ہمیں اومس لا کا استعمال کرتے ہوئے ایک تیسرے فیکٹر کی ضرورت ہے، یعنی کہ ہمیں ان نون فیکٹر وولٹیج اکراس دیٹ ریزسٹنس ہے. ریزسٹنس کی ویلیو پہلے ہی دی گئی ہے. اب تیسرا فیکٹر اگر ہم اومس لا کو دیکھیں تو کرنٹ کا فیکٹر ہے، یعنی کہ ہمیں اس ریزسٹنس میں سے فلو ہونے والے کرنٹ کی مقدار کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمیں ان ویلیوز کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس ریزسٹنس میں سے نیٹ فلو آف کرنٹ کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا. اس میں ایک مرتبہ پھر ہم ڈائریکشنز کا خیال رکھیں گے اور کرنٹ تھرو دیٹ ریزسٹنس کیلکولیٹ کریں گے. آئیے اس عمل کو سلائڈ پر دیکھتے ہیں. Now current through 1 kilo ohm resistance can be written as I sub 1K is equal to I4 minus I1. Once again, because this 1 kilo ohm resistance is being shared between the mesh number 1 and the super mesh, therefore we have written
I4 minus I1. Putting up the values of I4 and I1, we can have 0.5 minus into minus 2. Therefore, we can write the net current through the 1 kilo ohm resistance will be 2.5 milliamperes. اب جب کہ ہم نے 1 کلو اوم ریزسٹینس میں سے فلو ہونے والے نیٹ کرنٹ کو کیلکولیٹ کر لیا ہے تو ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اس کے اکراس وولٹیج ڈراپ کو کیلکولیٹ کر سکے. یہ وولٹیج ڈراپ ہم سادہ اومس لا کو اپلائی کرتے ہوئے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. آئیے اس وولٹیج کی ویلیو کو دیکھتے ہیں. Therefore, we can write V naught is equal to 1K into the current, which is 2.5 milliamperes. Hence, V naught is equal to 2.5 volts. عزیز طلبہ، اس مثال میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم کسی بھی ریزسٹنس کے اکراس جو کہ کسی بھی ریزسٹیو نیٹ ورک کا حصہ ہو وولٹیج کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یا پھر اگر ہمیں کرنٹ کی ویلیو کسی ایک پرٹیکولر ریزسٹنس میں سے پاس ہونے والی کرنٹ کی ویلیو کو کیلکولیٹ کرنا ہو تو بھی ہم اس کو کس طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں. اسے اگلی مثال میں تھوڑا سا اس سے مزید آگے، یعنی کہ کوئی دو ٹرمینلز جن کو ہم آؤٹ پٹ ٹرمینل سے بھی منسوب کر سکتے ہیں، کہا جائے کہ ان کے اکراس وولٹیج کو کیلکولیٹ کریں تو اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے گا. بنیادی طور پر اس کی تکنیک بھی وہی ہوگی جو ہم نے ابھی پچھلی مثال میں حل کی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہوگا کہ کیونکہ دو آؤٹ پٹ ٹرمینلز جن کے اکراس ہم نے وولٹیج کو کیلکولیٹ کرنا ہے وہ اکراس کوئی ایک ریزسٹنس ہوں گے، تو اس ریزسٹنس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے اور وہ ڈائریکٹ ایک میش کا حصہ بنے گا، اور اس میں سے کیونکہ وہ شیئرنگ نہیں ہوگا کسی دو یا تین میشز کے درمیان، لہذا اس میں سے ایک ہی کرنٹ فلو کر رہا ہوگا اور ہم اس کو بآسانی اومس لا اپلائی کرتے ہوئے وی ناٹ کو کیلکولیٹ کر سکیں گے. آئیے اس سے متعلق ریزسٹیو نیٹ ورک کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. From this circuit, we want to find the voltage V naught across the two terminals as it has been marked onto this circuit. The circuit consists of three independent current sources. All the three current sources are having different values starting from 1 milliampere, 2 milliamperes, and the final value is 4 milliamperes. Also note that there is no independent or dependent voltage source involved into this circuit. Whereas we have been asked to find out the value of the voltage at the output terminals. As usual, we have to proceed by assigning various values of current in the direction of our own choice and deciding about the super mesh also. Therefore, we consider the top left mesh as the mesh number 1, which is having a current I1 flowing through it. Next to that, on the right hand side, we consider the mesh number 2 and assume that the current I2 is flowing through it. Underneath the mesh number 2, we can consider the mesh number 3 and also consider that the current I2 is flowing through this mesh. After assigning this, we also consider that all these currents are flowing in the clockwise direction. Now, before we go to the mesh number 4, we have to decide whether we can assign the mesh number 4 an independent current or not.
The answer is we cannot, because mesh number 3 and our so-called mesh number 4, which is unassigned, are sharing an independent current source in between them. Therefore, we will be having some trouble when we will be writing some equation related to these meshes, because we don't have any voltages known to us. Hence, we consider that the mesh number 3 and the unassigned mesh combine together to create a super mesh. Therefore, we consider and assign the current I4 flowing through this super mesh. Starting from the mesh number 1, we can clearly see that the only current source which is involved into the mesh number 1 is having the value of 4 milliamperes. Also, we can observe that the direction of the current due to the 4 milliampere source and the direction of the current I1 are same. Hence, we can write I1 is equal to 4 milliamperes. Moving to the mesh number 2, once again we observe that the current due to the independent current source having a value of 2 milliampere is flowing opposite to our assigned value of the current, which is I2. Therefore, they will bear a negative sign in between them. Hence, we can write I2 is equal to minus 2 milliamperes. Moving to the mesh number 3, we can also see that the current source, which is having a value of 1 milliampere, is supplying the current into the same direction as our assigned value I3. Therefore, we can write I3 is equal to 1 milliampere. अब जबकि हमने करंट्स I1, I2 और I3 की वैल्यूज को डायरेक्टली मैश एनालिसिस से और सादा तकनीक से लिख लिया है, तो हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि केवीएल को अप्लाई करते हुए सुपर मैश की इक्वेशन को लिख सकें। लिहाजा सुपर मैश की इक्वेशन को लिखने के लिए एक मर्तबा फिर हम स्लाइड पर चलते हैं। Applying KVL for the mesh number 4, we start from the top left 1 kilo ohm resistance. Therefore, we can write 1K into I4, which is the current we have assigned to the super mesh, minus I1, which is the current due to the mesh number 1 or the neighboring mesh. After writing this term, we move to the next resistive element, which is into this circuit, having a value of 1 kilo ohm as well. Now, this resistance is shared by the mesh number 2, mesh number 3, and the super mesh. Therefore, we have to consider all the three currents which will be passing through this resistance. Hence, we can write 1K. First of all, we write I4 because we are writing the equation for the super mesh. Next to that, we observe that the current I2 is flowing in opposite direction to the I4. Therefore, we write minus I2. After writing this current, now we will consider the third current, which is in the form of I3. And because we can see that the current I3 is also flowing through 1 kilo ohm resistance into the same direction as I4, therefore we can write plus I3. After writing the term for the 1 kilo ohm resistance, we go through this element and move up to the 2 kilo ohm value. Now,
Considering the 2 kilo ohm value, we can also see that two currents are flowing through it. Although I mentioned earlier that there will be one current, but I ignored the supermesh current at that moment, so that was a sort of mistake. But now, as the circuit is in front of me, we can see that two currents are flowing through the 2 kilo ohm resistance. And also we can observe that these two currents, which is I3 and I4, they are flowing into the same direction. Hence, we can write 2K into I4 plus I3. That is why we have added them up. After writing the term for this 2 kilo ohm value, we reach at the 1 kilo ohm far left resistance. And because only I4 is flowing through this resistance, therefore we can write plus 1K into I4 and equate all these terms to 0. Simplifying this equation, we can write 1K I4 minus 1K I1 plus 1K I4 minus 1K I2 plus 1K I3 plus 2K I3 plus 2K I4 plus 1K I4 equals 0. Further simplifying it and putting up the values for the currents I1, I2 and I3, we can have 5K I4 minus 4 plus 1 plus 2 plus 2 equals 0. Therefore, we can write 5K I4 is equal to minus 1. Hence, we end up with I4 equals to minus 0.2 milliamperes. अजीज तलबा, अब जबकि हमने तमाम करंट्स जो कि इस रेजिस्टिव नेटवर्क में से फ्लो कर रहे हैं, यानी I1, I2, I3 और I4 की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है, तो हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम V0 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें. ताहम इससे पहले कि हम V0 की वैल्यू को कैलकुलेट करें, हमें केयरफुली देखना पड़ेगा कि दो टर्मिनल्स जिनके अक्रॉस हमें V0 को कैलकुलेट करना है, उसी के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस B लगी हुई है. अब इस रेजिस्टेंस में से नेट करंट की मिकदार जो कि फ्लो कर रही है वो कितनी है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. अगर हम सर्किट का बगौर मुतालिया करें तो हम देख सकते हैं कि 2 किलो ओम रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हमने V0 को कैलकुलेट करना है, उसमें से दो करंट्स फ्लो कर रहे हैं. एक करंट I4 है जबकि दूसरा करंट I3 है. और ये भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन दोनों करंट्स की डायरेक्शन एक ही है. लिहाजा नेट करंट जो कि इस रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा होगा वो दोनों का सम होगा. आइए इस अमल को स्लाइड पर देखते हैं. Therefore, we can write the current through the 2 kilo ohm resistance as I4 plus I3. Hence, applying Ohm's law, we can write the expression for calculating V0 as V0 is equal to 2K into I4 plus I3. Putting up the values of I4 and I3 into this expression, we can end up as V0 is equal to 2K into minus 0.2 plus 1. Therefore, we are left with the value of V0 as 1.6 volts. अजीज तलबा, आज के लेक्चर में हमने टू स्टार्ट विद सादा मैश एनालिसिस टेक्निक्स को देखा, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के सोर्सेज यानी कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज और इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज, डिपेंडेंट वोल्टेज यानी कि वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स
وغیرہ کا استعمال کیا گیا تھا۔ پھر ان مثالوں کو ہم آگے لے کر چلے اور اس میں تھوڑا سا ہم نے سپر میش کے قریب، سپر میش نہیں، سپر میش کے قریب اس کو ٹچ دیا تاکہ آپ سپر میش انالیسز کے لیے تیار ہو سکیں۔ مزید برآں ہم نے سپر میش تکنیک کو شروع کیا۔ سپر میش تکنیک میں ایک مرتبہ پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے بتاتا چلوں کہ جب بھی ہم نے سپر میش کو کنسیڈر کرنا ہوگا، ہمیں دو سادہ میشز کو کمبائن کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کی بیسک ایک جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی ایک کرنٹ سورس شیئر ہو رہی ہو، اور اگر اس کرنٹ سورس کے اکراس وولٹیج مینشن کر دی گئی ہو، پھر تو ہم سادہ میش انالیسس سے اس سرکٹ کا انالیسس کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وولٹیج ڈراپ کی ویلیو اکراس دیٹ کرنٹ سورس نہ دی گئی ہو، پھر ہمیں سپر میش کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ جب ہم سپر میش کی لوپ ایکویشن یعنی کہ کے وی ایل ایکویشن کو لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہر برانچ میں سے ہمیں کرنٹ کی ڈائریکشن آف فلو کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ کسی وقت ایک برانچ میں سے 3 کرنٹس فلو کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر کسی وقت ایک ٹائم میں کسی برانچ میں سے 2 کرنٹ فلو کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کرنٹس کو ہم ڈائریکشن کی نسبت سے لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ایک نیٹ کرنٹ جو کہ اس برانچ میں سے فلو ہو رہا ہو وہ حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے سپر میش جو سادہ ترین ہوتی ہیں ان کو بنایا جاتا ہے۔ آج کے لیکچر کا وقت یہیں پر ختم ہوا جاتا ہے، لیکن اگلے لیکچر میں ہم سپر میش سے متعلق مزید کمپلیکیٹڈ سرکٹس جن میں ہم کچھ وولٹیج ڈیپینڈنٹ وولٹیج سورسز اور کرنٹ ڈیپینڈنٹ کرنٹ سورسز، اور اب تک جیسا کہ ہم نے سپر میش کو 2 بیسک میشز پر کنسسٹ کرتے ہوئے انالیسس کیا ہے، اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ 2 سے زیادہ بیسک میشز کو کس طرح سے کنسیڈر کر کے ایک سپر میش بنایا جائے گا۔ اس میں پھر مزید کیئرفل ہونا پڑے گا کہ کس طرح سے ہم ہر برانچ جو کہ سپر میش اور آرڈینری میشز کے درمیان شیئرنگ ہوتی ہے ان میں کس طرح کرنٹ فلو ہو رہی ہے، اس کرنٹ کا خیال کرتے ہوئے ہم تمام سادہ یا پھر کے وی ایل ایکویشنز کو لکھ پائیں گے۔ اس طرح سے ٹو اسٹارٹ ود ہم سادہ ایکویشنز جو کہ کرنٹ کی فارم میں ہوتی ہیں ان کو لکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان ویلیوز کو ہم کے وی ایل ایکویشن میں پٹ اپ کر دیں گے۔ پٹ اپ کرنے کے بعد ہم اپنی ڈیزائرڈ ویلیوز کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔